Hello students, welcome to UGC NET Under 24/7 and this is your Faculty of Life Sciences Amit Singh in front of you. और आज से यानी अभी से we are going to start our preparation for CSIR UGC NET Life Sciences effective today. और रोज़ाना आपकी जो YouTube सेशन की टाइमिंग रहेगी वो 4 to 5 PM की रहेगी। तो मुझे उम्मीद है कि वो सारे बच्चे जिनको काफ़ी दिनों से ये ललक थी कि आई वांट टू प्रिपेयर लाइफ साइंसेस फ्रॉम अंडर 24/7 और फ्रॉम वन ऑफ द फैकल्टीज वी वर स्टडिंग इन PGTs एंड ऑल, तो फाइनली द टाइम हैज़ कम एंड फ्रॉम टुडे वी विल बी स्टार्टिंग आवर प्रिपरेशन फॉर नेट लाइफ साइंसेस। तो आप सब तैयार हैं एक अच्छे जोश के साथ? तो लेट्स start ahead and see what is the syllabus for NET Life Sciences। लेकिन इसके पहले कि syllabus के ऊपर मैं आऊं, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि who give this examination, who can give this examination, what is the number of questions that come in this examination, what are the topics from which these questions come, उसके ऊपर हम एक बार थोड़ा सा गौर करेंगे। सबसे पहले NTA UGC नेट लाइफ साइंसेस की मैं बात करूं तो जो नंबर ऑफ टेस्ट होते हैं वो 2 बार होते हैं साल में, ट्वाइस इन अ ईयर, एंड दैट हैपेंस इन जून एंड दिसंबर। कब कब होती है? जून में होती है और दिसंबर में होती है। जो फेलोशिप होती है जूनियर रिसर्च फेलो की, दैट इज ऑफ 5 years, 5 साल की होती है। जूनियर रिसर्च फेलो दैट इज फॉर द फर्स्ट 2 years, JRF के पोस्ट में जब आप रहते हैं तो पर मंथ आपको स्टाइपेंड के रूप में 31,000 मिलता है फ्रॉम the UGC CISR, University Grants Commission, UGC का फुल फॉर्म ये होता है। And after second year, when you become a senior research fellow, जब आप senior research fellow बन जाते हैं तो आपको monthly मिलता है 35,000 from the third year, मतलब third, fourth और fifth, ये 3 साल आपको as a research fellow, as a senior research fellow, you get 35,000 every month. Annual contingent grant of rupees 20,000 is added extra apart from what you are getting on a monthly basis। इसके अलावा 20,000 रुपए सालाना आपको दिए जाते हैं as a contingent amount। This NTA Life Sciences examination for JRF is organized by National Testing Agency, that is NTA। Medium of examination is both in Hindi and English, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही तैयारी करवाई जाती है। Mode of examination is computer based, that is CBT method। Time duration is 3 hours and the total number of questions that you have to face उसके बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन जो मार्क्स रहते हैं वो 200 मार्क्स के पेपर होते हैं। Now, what are the portions from which the questions come? So basically, if you see your syllabus, you have A, B, C, 3 segments. Number A is the general aptitude portion where you are asked 20 questions and you have to answer only 15 out of them. आपसे question 20 पूछे जाते हैं general aptitude से, जिसमें 20 में से आपको 15 सवालों का जवाब देना होता है। The second part, B and C, that is what I'm gonna teach every day between 4 to 5। पार्ट बी और पार्ट सी की मैं बात करूं तो पार्ट बी में 50 सवाल क्वेश्चंस लाइफ साइंसेस से पूछे जाते हैं, जिनमें आपको करना होता है 35, और पार्ट सी में 75 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, जिसमें से यू हैव टू आंसर ओनली 25, 4 मार्क्स ईच। उनके जो स्कोर होते हैं वो 4 नंबर मिलते हैं हर एक सही के लिए। And negative marking is 25 for every wrong answer। Good afternoon, Farheen. Good afternoon. Welcome to the session. Now, the nature of questions is MCQ type, multiple choice questions you are given. Number of questions is 145. The total number of questions is 145. So, part A is 2 marks each. That is 15 into 2 is 30 marks. Part B, you have to answer only 35 questions, 2 marks each. That is 70 marks, ये हो गए 100 marks। And part C is you are asked 75 questions in which you have to answer only 25, सिर्फ 25 आपको जवाब देने होते हैं, and 25 into 4 is 100। तो 70, 30, 100 और यहाँ पे 100, तो total number of questions is 145 but total marks is 200। So this is the bifurcation of your syllabus। Now, एलिजिबिलिटी कौन दे सकता है? अगर मैं NTA के द्वारा संचालित ये CISR UGC नेट में जूनियर रिसर्च फेलो बनना चाहता हूं या बनना चाहती हूं तो क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होगी? इफ यू आर अ मास्टर इन साइंस यू कैन गिव द एग्जामिनेशन।
or you are undergoing an integrated Bachelor in Science and a Masters of Science course, you can even give that. If you are undergoing if you have a degree of Bachelor of Science which is of 4 years, or you are a Bachelor in Engineering, or you have a degree in technology, BTech, or a B Pharma degree, or you have a MBBS degree, or you have an honors degree in Bachelor of Science, that is a 3-year degree course in colleges. तो अगर आपके पास इनमें से कोई भी डिग्री है तो यू आर एप्लीकेबल फॉर योर एग्जामिनेशन. कैंडिडेट्स विद एटलीस्ट 55% मार्क्स फॉर SC ST जनरल एंड OBC कैंडिडेट्स विद एटलीस्ट 55 मार्क्स. For SC ST, third gender and persons with disability, candidates with at least 50% marks is required. मतलब जनरल एंड OBC के लिए आपको 55% मार्क्स स्कोर करना होगा. अपने जो आपकी डिग्री होगी उसमें कम से कम 55% आपकी होनी चाहिए. एंड फॉर SC ST, फिजिकली डिसेबल्ड, they and for transgenders, they are required only 50% marks for giving this examination. Age limit क्या है? For JRF, for Junior Research Fellowship, the age limit is 28 years. Relaxation is up to 5 years for SC ST PH and female applicants. Relaxation up to 3 years for OBC. And for general, there is no relaxation. It's just 28 years. मतलब अगर आप OBC category से belong करते हो तो if you can give this examination up to an age of 31. And if you are belonging to SC or ST category, or if you are physically handicapped, तो फिर 28-5-33 साल तक आप इन examinations के लिए तैयारी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप क्लियर कर पा रहे हैं कि नहीं. अब बात आते हैं कि सर जूनियर रिसर्च फेलोशिप में व्हाट आर द टॉपिक्स दैट वी नीड टू स्टडी. तो जैसे कि मैंने बताया कि लाइफ साइंसेज में आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ पार्ट बी एंड पार्ट सी. पार्ट ए इज जनरल एप्टीट्यूड पोर्शन, जो बहुत ही मतलब एकदम ग्रास रूट लेवल आपसे सवाल पूछे जाते हैं जो आप आराम से जवाब दे दोगे. नाउ पार्ट बी एंड सी में व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू स्टडी फॉर गेटिंग दिस फेलोशिप. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा द टोटल पार्ट बी एंड सी, इट इज डिवाइडेड इनटू 13 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स या यूनिट्स. 13 इंपॉर्टेंट यूनिट्स. इन 13 इंपॉर्टेंट यूनिट में से पहला जो इंपॉर्टेंट यूनिट है दैट इज मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरैक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी. सबसे पहले बिकॉज स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स आपके दिमाग में आ रहा होगा कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो केमिस्ट्री का है. Molecules and chemical bonding we study in chemistry, but here we need to study of those atoms and molecules with relevance to biology. Because if we are studying the structure of a carbohydrate, if we are studying a structure of a protein, or if we are studying a structure of a lipid, in all the three circumstances, or enzymes, catalyst, reactants, kuch bhi, so we have to study it to the atomic level, because we need to go and study the reactivity of the said molecule or substance, right? तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स हमें पढ़ना है, मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल बॉन्ड्स. अ ब्रीफ आइडिया. Composition, what is the composition of an atom? मतलब the theories related to it, the different kinds of spectrum that we need. Structure and functions of biomolecules. Biomolecules includes your fatty acids, your proteins, amino acids, carbohydrates, the tertiary, primary, quaternary structures, enzymes, their functions, cofactors, coenzymes, everything. Carbohydrates, lipids, proteins, nucleic acid, and vitamins. The next portion that we'll study under this unit is stabilizing interactions, van der Waals force, electrostatic interaction, hydrogen bonding, hydrophobic and hydrophilic interactions between molecules on the basis of philicity and phobicity. सर आप ये सीरीज कंटिन्यू रखोगे क्या? बिल्कुल, आज से शुरुआत हुई है एंड फ्रॉम टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग वन बाय वन, एक एक करके हम स्टडी करना स्टार्ट कर देंगे, है ना. जो भी हम टॉप यूनिट को उठाएंगे, देयर आर 13 इंपॉर्टेंट यूनिट्स जैसे कि मैंने बताया, तो 13 यूनिट्स में से किसी भी एक यूनिट को हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं एंड आई होप यू ऑल विल एंजॉय इट एज वेल. तो आज तो बस मैं आपसे सिलेबस और स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहा हूं कि इफ यू आर गिविंग दिस एग्जामिनेशन, what qualification do you need, what is the age limit that you need, what are the topics, what are the components that you need to study, and from where you need to study. That is all in this class. Principle of biophysical chemistry, including pH, buffer reaction, kinetics, thermodynamics, colligative properties as in colloids, liquid and solids. मतलब जो आपकी surface chemistry जो थी, colloidal and colligative जो properties थी, उनकी भी relevance आप यहाँ biology में देखते हो. This is again a part of sir KVS या NET. अब KVS या NET, KVS on the parallel ground I am teaching KVS PGT students, but this will be my prima facie from now, है ना.
Bioenergetics, glycolysis, oxidative phosphorylation, coupled reaction, group transfer, biological energy transducers. These all are separate entities that we'll be discussing under molecules and their reactions and relevance with biology. Now, what are the principles of catalysis? What are the enzymes responsible for catalysis? What are those different categories of enzymes, as is isomerases, hydrolases, ligases, lyases, in सबके structural and anatomical structures, structural and anatomical functions. Apart from that, their chemical structure, their reactivity with other compounds, organic and inorganic, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे. Conformation of proteins, Ramachandran plot, secondary, tertiary and quaternary structure of proteins, domains, motif and folds. जितने तरीके की हम मिक्स स्ट्रक्चर देखते हैं, अगर आप ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर देखते हो, अगर आप एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर देखते हो, स्पाइरल स्ट्रक्चर देखते हो, तो उसके रिगार्डिंग जितने भी प्लॉट्स एंड ग्राफ्स हैं वो भी हम कंटिन्यूअसली स्टडी करेंगे. कंफर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ए बी जेड डीएनए, टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, माइक्रो आरएनए, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर्स, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स एंड विटामिन्स. हाउ डू दे get absorbed and assimilated in our body by the different organ systems that is present in a normal human beings, उसकी भी study करेंगे. तो we are not going to study with respect to a human being, but we are going to study with respect to a molecule that is getting absorbed and assimilated within the human body. Next, cellular organization. The second unit will be cellular organization. Second unit cellular organization को आप PGT की अगर आप तैयारी करते थे या करते हो तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि in cellular organization what do you need to study? You need to study about the types of cell, their structure. English and Hindi, UGC NET के environment, English and Hindi, किरण कुशवाहा, ठीक है? तो membrane structure and function, structure of model membrane, that is your plasma membrane के different तीन models दिए गए थे, trilamellar, sandwich, जिसे sandwich model के भी नाम से जानते हैं, unit membrane model, and then we have the third model that is internationally accepted, जिसे हम what do we call the third model? Fluid mosaic model, in which we say that protein icebergs are dipped in a sea of phospholipids, right? तो उसको समझेंगे with diagrammatic approach. We'll be understanding what are the extrinsic proteins, what are the intrinsic proteins, where is the cholesterol present, where are the tunnel proteins working, how they are working, which is hydrophobic, which is hydrophilic. Everything we'll be studying under the structure of membranes. Lipid bilayer and membrane protein diffusion, the osmosis, ion channels action, active transport, ion pumps, mechanism of sorting and regulation of intracellular transport, electrical properties of membranes, sodium potassium pump that is working continuously. We'll be studying this. That will be the first part of cellular organization. Next we'll be studying the different cell organelles and their functions, physiology. Structural organization and function of intracellular organelles, cell wall, nucleus, mitochondria, Golgi bodies, lysosomes, endoplasmic reticulum, peroxisomes, plastids, vacuoles, chloroplast, structure and function of cytoskeleton and its role in motility. Cytoskeleton is microtubules, intermediate filaments and microfilaments. तो इन सब का कहां और किस तरीके से फंक्शन होता है जिससे कोशिकाओं के द्वारा जितने भी फंक्शंस हम स्टडी करते हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं. We will be studying the mechanism all together here. Organization of genes and chromosomes, operon concept. This is the lac operon concept. Interrupted genes, gene family, structure of chromatin and chromosomes, satellites, heterochromatin and fibers, unique and repetitive DNA, heterochromatin, euchromatin, transposons, cell division and cell cycle में mitosis, meiosis 1, meiosis 2, then different stages, packaging, diplotin, diakinases, chiasmata formation, synaptonemal complex का formation, उनकी regulation कैसे हो रही है, how the hormones are playing their important role, steps in cell cycle and control of cell cycle we'll be doing here. Microbial physiology will be studying the growth, yield and characteristics, that is विशेषताएं हिंदी में कहते हैं, strategies of cell division and the stress response that a cell give with respect to this. Sir, PGT bio में आप deeply explain करते हो, यह तो नेट की क्लास है, पूरा डुबा के स्टडी कराओगे आप as usual. I know awesome series होगी sir, please keep it up. Thank you so much Anju for this lovely statement or a comment or a compliment, whatever I say. But yes, जो चीज आप PGT बायोलॉजी में देखते थे, the depth जो आप देखते थे, वो depth अब और ज्यादा बेहतर तरीके से होगा. आज तो मैं नहीं कहूंगा, but yes, effectively tomorrow, because today we are just discussing the strategy and not even the strategy, just the syllabus.
Tomorrow onwards we will be studying directly the topics. मैं किसी भी एक यूनिट को उठाऊंगा and then I'll start explaining it. And I hope आप सारे बच्चे जो भी नेट की क्लास लेना चाहते हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं for being a junior research fellow, I hope you all will be enjoying it. But yes, on the contrary, I would want one thing: do like and share so that it can benefit much more students ahead in future. Now, इसके बाद फंडामेंटल प्रोसेसेस. फंडामेंटल मींस मूल, जिनकी जरूरत है ही है, चाहे अगर वो कोई भी ऑर्गेनिज्म है. वी आर स्टडीइंग लाइफ साइंसेस, राइट? सो इफ वी आर स्टडीइंग लाइफ साइंसेस, दैट मींस स्टडी ऑफ लाइफ. स्टडी ऑफ लाइफ कैन ओनली बी सीन इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो इफ वी आर स्टडीइंग लाइफ इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, द एसोसिएटेड मेटाबॉलिक प्रोसेसेस and their functions, which are including and inheriting all the different processes that we are going to study in genetics, उनके बारे में यहां थोड़ा स्टडी करना होगा. जैसे डीएनए रेप्लिकेशन. रेप्लिकेशंस मींस दोहराना, रिपेयर एंड रिकॉम्बिनेशन. यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन क्या है, एंजाइम्स इन्वॉल्व कौन कौन से होंगे, रेप्लिकेशन की ओरिजिन कहां से होगी, रेप्लिकेशन फॉर्क किसे कहते हैं, फिडेलिटी ऑफ रेप्लिकेशन किसे कहा जाता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रेप्लिकॉन्स कौन बनते हैं, डीएनए डैमेज क्या होता है और उनकी रिपेयर मैकेनिज्म्स क्या क्या है. Apart from that, RNA synthesis किस तरीके से होती है, उनकी प्रोसेसिंग कैसे होती है, which includes transcription factors and machinery, formation of initiation complex, transcription activators and repressors, RNA polymerases, capping, elongation and termination, RNA processing, RNA editing, splicing, polyadenylation, structure and function of different types of RNA, RNA transport, protein initiation, codons, non-codon factors, how are they associated. ये सारी बातें आपको इस टॉपिक में समझ में आएगी कि as in the previous chapter you just studied about the biomolecules associated, right? Now वो biomolecules का जब metabolism में आप उनकी function पढ़ते हो तो सबसे पहले metabolic processes में क्या क्या होंगी, you study that, and then in the next chapter when these are going into the process of metabolism, then what are the things that is going to happen, वो हम study करेंगे इसके बाद वाले chapter में. This is at microscopic level. Microscopic level भी कम हो जाएगा, atomic and molecular level. We are studying here at the molecular and atomic level. The different kind of enzymes related, ATP synthetase, translational proofreading, translation inhibitors, post-translation modifications and proteins. In short, you can say it is the molecular basis of studying all those nucleic acids that is present in the human body and is transferred to other organisms generations by generations. कैसी चीजें होती हैं, ये सारी बातें हम यहाँ समझेंगे. सर मेरा एम था सर नेट, बट कभी कोई टीचर ही नहीं मिला, सो आई एम टीचिंग लाइन में आ गई पीजीटी में, बट विद केवीएस आई विल ट्राई टू हैंडल नेट क्लास. सर आई नो आपके साथ लाइफ साइंसेस का वर्ड क्लियर होगा. बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, एकदम होगा, टेंशन ना लीजिए. कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन एट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन लेवल, रेगुलेशन ऑफ फेजेस, different kind of phages का regulation, viruses, phages means bacteriophage, transcriptophage, आपने नाम सुना होगा, prokaryotic and eukaryotic gene expressions, role of chromatin in regulating gene expressions and gene silencing. देखो अभी तक आप जब KVS या DSSS इन सब की बातें करते हो तो वहां you study at a moderate level. Here you have to study at a greater depth. जैसे वहां पे जब आप phytohormones को स्टडी करते थे तो you just used to study auxin, gibberellin, cytokinin, abscisic acid and ethylene. But apart from that, I'll be teaching 4 or 5 more important categories of hormones, which are again phytohormones, and they are having their action on plant growth and development. वो हम JRF में study करेंगे. Cell communication and cell signaling. How do a cell communicate and how do they give signal for a specific process? ये हम देखेंगे. Host parasite interaction, recognition and entry processes of different pathogens. That means whenever a pathogen is trying to enter a body, what are the different signals that a cell starts giving and how do it function? ये उस समय की बात है. Like bacteria, virus into animal and plant host cells, alteration of hosts behavior by pathogens. मतलब पैथोजेंस के द्वारा हम होस्ट यानी जो शिकार है, समझ लो एक बैक्टीरियल पैरासाइट है, एक बैक्टीरियल पैथोजन है, वो ह्यूमन बॉडी में एंटर करना चाह रहा है, तो पैथोजन के वजह से होस्ट के बॉडी में क्या चेंजेस आती हैं उनकी स्टडी. वायरस इंड्यूस्ड सेल ट्रांसफॉर्मेशन, वायरस जब उस बॉडी में एंटर कर जाता है, व्हेन इट टेक्स द चार्ज, देन व्हाट आर द चेंजेस दैट इट मॉडिफाइज, वो पढ़ेंगे. पैथोजन इंड्यूस्ड डिजीजेस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, सेल फ्यूजन इन बोथ नॉर्मल एंड एब्नॉर्मल सेल्स. Cell signaling में studying the hormones and their receptors, cell surface receptor signaling through G protein coupled receptors, signal transduction pathways, second messengers, regulation of signaling pathways, bacterial and plant 2 component signaling system, bacterial chemotaxis and quorum sensing. These are some new and important topics जो आप
पीजीटी के अलावा यहां स्टडी करने वाले हो। Cellular communication, regulation of hemopoiesis, general principles of cell communication, cell adhesion, roles of different adhesion molecules, gap junctions, extracellular matrix, integrins, neurotransmissions and their regulations. Previously, if I take some instances of your PGT and TGT preparation, so you must have noticed that we used to study the interdigitations, the gap junctions, the tight junctions, which is just present between connective and epithelial tissue. And basement membranes and the properties we used to study. When I'm studying a biomolecule, whether it is a carbohydrate, protein, amino acid, fatty acid, or a vitamin, if it is entering into a body and trying to change the mechanism, it is but obvious that it will enter through a pathway. So we have to study the entire cell and cell process first. Then this molecule means either a carbohydrate or a fatty acid or a cholesterol. Once you know the structure, then you study ki if it is entering into a metabolic pathway, what are the different types of reactions that we are going to see? If the target cell is a pathogen, then pathogen, is it a bacterial pathogen, is it a viral pathogen, is it a protozoic pathogen? So on the basis of pathogens, there are different cell signaling happen within this host as well as the organism which is causing the pathogenicity. तो ये सारी चीजें एकदम डेप्थ में जाके आप पढ़ोगे when we will be inside the topic. अभी सिर्फ टॉपिक्स लिखे हुए हैं, इसलिए मैं बस आपको सिलेबस बता रहा हूं. But once when we will be in the topic, then I'll try and make you understand the depth of cell signaling and how do the host cell signals once it sees the pathogen entering into that said organism. Cellular communication में neurotransmission का role and the regulations. Then we have developmental biology. Now, once the metabolism starts, देखिए एक के बाद एक आपको क्यों बताया जा रहा है. सबसे पहले you need to understand what are the biomolecules you are made up of. Then, what is the structure of that biomolecules? How do they function? Now, what is the metabolic process and how are they going to change or modify once they are entering into a, you can say, metabolic pathway. अब मेटाबॉलिक पाथवे में जब आएगी तो व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ये हमें डेवलपमेंटल बायोलॉजी में सीखने को मिलता है. एज एन बेसिक कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंसी, कमिटमेंट, स्पेसिफिकेशन, इंडक्शन, कंपिटेंस, डिटर्मिनेशन एंड डिफरेंशिएशन, मॉर्फोजेनेटिक ग्रेडियंट, सेल फेट एंड सेल लीनिएजेस, दैट इज लिंकिंग्स, स्टेम सेल्स, जीनोमिक इक्विवेलेंस एंड साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स, इम्प्रिंटिंग, म्यूटेंट्स एंड ट्रांसजेनिक एनालिसिस. मतलब डेवलपमेंट अगर हो रहा है तो देयर विल बी अ नॉर्मल डेवलपमेंट एंड देयर विल बी अ म्यूटेशनल डेवलपमेंट एज वेल, जो बहुत तेजी से अनफेवरेबल सिचुएशंस की वजह से हो गई या फिर ड्यू टू लैक ऑफ सम भी हो सकती है. Cell surface molecules in sperm, egg recognition in animals, embryo sac development and double fertilization in plants, zygote formation, cleavage, blastula formation. This is simple, which you study in normal human reproduction. That is the process of embryogenesis. Embryonic fields, gastrulation and formation of germ layers, morula, blastula, gastrula, blastocyst and their implantation in the uterine wall. ये सारी बातें यहाँ सीखोगे. Embryogenesis, establishment of symmetry in plants as well as animals, and formation and the germination. How the symmetry is maintained with, if it is a यूकैलिप्टस का प्लांट है तो यूकैलिप्टस से निकलता है, एनिमल का सेल है तो एनिमल से निकलता है. तो देयर मस्ट बी अ फेट ऑफ सिमेट्री दैट इज बीइंग मेंटेन्ड एट द मॉलिक्यूलर लेवल. वो सारी बातें भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे इन डेवलपमेंटल बायोलॉजी. द नेक्स्ट टॉपिक दैट विल बी स्टडिंग in developmental biology is morphogenesis and organogenesis. How they are taking the structure and how organ development is happening. Differentiation in dictyostelium, axis and pattern formation. This might be a new word for you. Drosophila, amphibia and chick. Organogenesis, not just humans. Now you are going to study at a further level in different phylums as well. Caenorhabditis elegans, islands, induction, limb development and regeneration in vertebrates, differentiation of neurons, post-embryonic development, larval formation, metamorphosis, environmental regulation of normal development, sex determination, etc.
मॉर्फोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस इन प्लांट्स में आप स्टडी करोगे, ये तो एनिमल्स में था. इन प्लांट्स अबाउट द रूट एपिकल मेरिस्टम एंड शूट एपिकल मेरिस्टम, अबाउट द रूट डेवलपमेंट, लीफ डेवलपमेंट, फाइलोटैक्सीज, ट्रांजिशन टू फ्लावरिंग, फ्लोरल मेरिस्टम्स एंड फ्लोरल डेवलपमेंट, हाउ द शूट एपिकल मेरिस्टम फॉर्मिंग द फ्लोरल मेरिस्टम, व्हाट आर द चेंजेस हैपनिंग एट द मॉलिक्यूलर लेवल. इन अरेबिडोप्सिस एंड एंटीरेनियम मेजर्स, प्रोग्राम सेल डेथ किसे कहते हैं, एजिंग किसे कहा जाता है, एंड सेनेसेंस दैट इज सेल डेथ किसे कहा जाता है. These are the topics in part B that you have to study. Fourth is system physiology in plants. That is normally which you study as plant physiology. Normally which you study as plant physiology in your PGTs. In JRF we call it system physiology because plant is a tissue system. It is an aggregate of tissue system which forms an organ, and organ forms an aggregate of organ systems, and organ systems together is called an organism. Photosynthesis in plant physiology will be studying photosynthesis, in which the light harvesting complexes, that is photosystem 1, photosystem 2, their mechanism of electron transport, photoprotective mechanism, CO2 fixation, C3, C4 plants, CAM pathways, that is crassulation, acid metabolism, ये सारी चीजें. Yes, ये सारी 11th क्लास की टॉपिक्स आपको दिख रही हैं, बट नाउ दीज टॉपिक्स यू आर गोइंग टू स्टडी एट अ फायर लेवल. ठीक है ना. अब टॉपिक्स तो देखो, एस्ट्रो जियोडायनामिक्स है ना. एस्ट्रो जियोडायनामिक्स इज अगेन अ चैप्टर ऑफ स्पेस साइंसेस, बट whatever components that you will start with in studying astrodynamics, that comes from class 1 and 2. Mass, matter, particle, element, compound. इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो class 1 है. Getting my point? You might be saying some of the words that you might have heard before, but here the impact will be different. Getting my point? Respiration and photorespiration, citric acid cycle, plant mitochondrial electron transport and ATP synthesis, alternate oxidase, role of alternate oxidation, photorespiratory pathway, nitrogen metabolism, will be studying the nitrate and ammonium assimilation, amino acid biosynthesis. In plant hormones, we'll be studying the biosynthesis, storage, breakdown and transport, physiological effects and mechanism of actions in this topic. और क्या है प्लांट फिजियोलॉजी में? सेंसरी फोटोबायोलॉजी जो नहीं है, structure, function and mechanism of action of phytochromes, cryptochromes and phototropins, new to you, not in PGT. Stomatal movements, photoperiodism and biological clocks, solute transport and photoassimilate translocation, uptake, transport and translocation of water, ions, solutes and macromolecules from soil through cells across membranes. मतलब कुल मिला के देखो तो जो चीजें आप ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स में पढ़ते थे इन टर्म्स ऑफ डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्लाज्मोलाइसिस, वो सारे बाय द प्रोसेसेस ऑफ सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी, वो सारी चीजें एट अ different level you are going to study here. Secondary metabolites, biosynthesis of terpenes, terpeneols, phenols, nitrogenous compounds and their roles, latex. Stress physiology, responses of water to biotic, pathogen and insects, and abiotic, that is water, temperature and salt. मतलब इसकी अधिकता से क्या हो जाएगा, इसकी कमी से क्या होगी, what are the stress that a plant in together tolerates at a specific concentration, mechanism of resistance to biotic and tolerance to abiotic stresses. In animal physiology, what you are going to study? Animal physiology में अब तक जो digestive system, respiratory system, circulatory system, I'll say endocrinology, your skeletal system, your muscular system और इनकी जियोडायनामिक्स जो आप स्टडी करते थे वो यही एनिमल फिजियोलॉजी में और डेप्थ में जाएगा. ब्लड सर्कुलेशन में स्टडिंग द ब्लड कॉर्पसल्स, हीमोपोएसिस एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स, प्लाज्मा फंक्शन, ब्लड वॉल्यूम रेगुलेशन, ब्लड ग्रुप्स, हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर, हीमोग्लोबिन के डिफरेंट फॉर्म्स दैट डू फॉर्म इन ह्यूमन बॉडी, इम्यूनिटी, हीमोस्टैसिस, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ हार्ट स्ट्रक्चर with other phylums, myogenic heart जो कि हमारा हृदय है, specialized tissue, why heart is a specialized tissue, echocardiogram, its principle and significance, echocardiogram कैसे होती है, what is the principle on which an echocardiography test is done, ये सारी चीजें. Cardiac cycle, heart as a pump, blood pressure, neural and chemical regulation of all above, इनकी neural regulation और इनकी hormonal regulation, chemical regulations means hormonal regulations, सारी चीजों का आपको compare करना है. Respiratory system will be studying the comparison of different respiration in different species, then we'll be doing the anatomical considerations as in cardial notch अगर ढंग से नहीं बना तो, एडजस्टमेंट ऑफ लिवर ढंग से नहीं हुआ तो, लेफ्ट लोब ऑफ लिवर, लेफ्ट लोब ऑफ लंग बहुत ज्यादा नैरो हो गया तो इन नेट लाइफ साइंसेस व्हाट इज डिफरेंट
from the static portion you used to learn ahead. पहले, इसके पहले मतलब previously what you used to study, और अब में differences ये रहा कि now you have to study the pros and cons कि normal structure तो है लेकिन अगर वो mediate करता है तो क्या होगा, और अगर होगा तो वो क्यों होगा, और उसका कारक कौन होगा, who will be the causative agents or factors responsible for that. Neural and chemical regulation of respirations, nervous system will studying the neurons, action potential, gross neuroanatomy of the brain and spinal cord, central and peripheral nervous system, neural control of muscle tone and posture. Sense organs will be studying vision, hearing and tactile response, that is your skin, ears and eyes. Excretory system, comparative physiology of excretion, kidney, urine formation, urine concentration, elimination, micturition, regulation of water balance, blood volume, blood pressure, electrolyte balance, acid base balance. In thermoregulation, comfort zone, body temperature, physical, chemical, neural regulation, acclimatization, stress and adaptation. In digestive system, you study the entire process of digestion, absorption, energy balance and the basal metabolic rate that is maintained in our body. If the BMR changes, what are the pros and cons, that will be studying. Endocrinology and reproduction will be studying the different endocrinal glands that is responsible for the development of different organs in our body, and mechanism of hormone action, hormones and diseases, reproductive processes, neuroendocrine regulation. That means how in a joint additive manner reproductive system, neurological system and our endocrine system jointly coordinate to control the entire organs of our body. Now comes the inheritance biology, how these processes are inherited, how these functions and properties are inherited, and it is seen in every generations. Mendelian principle, dominance, segregation, independent assortment, deviation of Mendelian inheritance, concept of gene, allele, multiple alleles, pseudo alleles क्या होते हैं, complementation tests के बारे में आपको जानना है. Now, if we extend the Mendelian principles, codominance, incomplete dominance, gene interaction, pleiotropy, genomic imprinting, phenocopy, penetrance, expressivity, linkage, linkage में cross linkage, crossing over, sex linkage, sex limited and sex influenced characters. Recessive epistasis, dominant epistasis, ये सब पढ़ोगे. Gene mapping with molecular markers, mapping with using somatic cell hybrids, development of mapping population in plants, extra chromosomal inheritance, inheritance of mitochondrial and chloroplastic genes, maternal inheritance we will be studying here. Next, microbial genetics will be studying the methods of genetic transfers, transformation, but at a microbial level we'll be studying the same thing. What pedigree analysis करेंगे, लॉर्ड स्कोर क्या होता है, कार्योटाइप्स कैसे स्टडी करते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स इसमें कौन कौन से होंगे. Quantitative genetics will be studying the polygenic inheritance, heritability and measurements of QTL mapping. Mutational में what are the types of mutation, what are the causes of mutation, how can we detect a mutation, mutant के types कौन कौन से होते हैं, lethal genes किसे कहा जाता है, conditional, biochemical and loss of function किसे कहा जाता है, gain of function, what is gain of function in mutation, structure and numerical alterations of chromosomes, और अगर mutation होता है या if there is a physical and chemical change, is there a change in a chromosomal number, and if there is a change in chromosomal number, what are those changes, what are the causes of those changes, deletion, duplication, inversions, translocation, ploidy, क्या क्या हुआ है, जो भी हुआ है उसके causes and effects आपको स्टडी करने हैं. Recombination, homologous and non-homologous recombination including transposition, site-specific recombinations, etc. This is your genetic terms and diversity of life forms. जिस चीज को आप सबसे पहले पढ़ते हो when you study biology, yes, this is the entire syllabus. जिस चीज को सबसे पहले आप biology में पढ़ते थे, since your कह सकते हैं जो क्रम रहा आपके पढ़ने का, उस पढ़ाई के क्रम में जहां जीवन को आप पढ़ते थे उसकी शुरुआत आप यहां से करते थे कि जीवित जो जगत है वो इतने भागों में विभाजित है, उसमें मोनेरेंस, प्रोटिस्टेंस, एल्गी, प्लांटी, फंगी ऐसे ऐसे है. In diversity of life forms, we'll be studying first of all the taxonomy, the different physical, artificial, practical modes of classification. Classifications are given. Levels of structural organization, that is the hierarchy you will be studying. Outline classification of plants, animals and microscopic organisms. Important criteria for classification in each taxon. What are the important criteria by which we can classify, just in animals on the basis of symmetry, on the basis of body organization, on the basis of germinal layers. We used to divide. Similarly, plants में कैसे और microorganisms में कैसे, ये सारी चीजें देखनी है.
Natural history of Indian subcontinent, major habitat of the subcontinent, geographic origins and migration of species, common Indian mammals, birds, seasonality and phenology of the subcontinent. This is new to you. Organisms of health and agricultural importance, common parasites and pathogens of humans, domestic crops and crops. ये तो आपने पढ़ा हुआ है, but थोड़ी depth बढ़ जाएगी. Next, ecological principles. Now we are coming down to ecology. The environment, physiological environment, biotic and abiotic interactions, commensalism and adaptation, different types of humoral adaptation, human adaptations that a human being does or any organism does with any other organism in a certain ecosystem. Population ecology, characteristics of population, population growth curves, natality, mortality, a stabilizing population growth, increasing population growth, declining population growth we'll be studying here. Dispersal, interdemic extinctions, age structured populations, species interactions में types of interactions, interspecific, herbivory, carnivory, pollination and symbiosis. जितने भी types of आपने interactions पढ़े हैं वो सारी बातें यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं. Community ecology, nature of communities, community structure, attributes, level of species and measurements, edges and ecotones, biomes, ecological succession, types, mechanism, change, involved succession, concept of climax. Ecosystem में structure and function, energy flow कैसे होती है ecosystem में, different life cycles you'll be studying, some important function of typical Indian ecosystems, terrestrial, aquatic. Terrestrial में we'll be studying forests and grasslands, aquatic we'll be studying freshwater, marine and as well as estuary. Estuaries को ही commonly estuarine भी कहा जाता है. Major terrestrial biomes, theory of island biogeography, biogeographical zones of India. Specifically India को हम study करेंगे. Sir, English batch start. English batch start मतलब this is a life sciences class, man. Applied ecology, environmental pollution, global environmental change, biodiversity status, monitoring and documentation, major drivers of biodiversity change, biodiversity management, how can we manage those changes, conservational biology, what are the acts and principle and pact signed for the overall development and conservation of ecosystem. Then comes the evolution and their behavioral responses. Emergence of evolutionary thoughts, Lamarck की क्या theory रही, Darwin की क्या theory रही, concept of variation, adaptation, struggle, fitness and natural selection. Mendelism, spontaneity of mutations, the evolutionary synthesis, origin of cells and unicellular evolution, in origin of basic biological molecules, abiotic synthesis of organic monomers, polymers, concept of Oparin and Haldane, concept, experiment of Miller's experiment, evolution of prokaryotes, origin of eukaryotes, photosynthesis, aerobic respiration कैसे हुई, planet Earth की formation कैसे हुई, कब oxidizing atmosphere था, कब reducing atmosphere था, what were the changes that happened in the environment due to which this planet became sustainable for life to exist. Molecular evolution में concept of neutral evolution, molecular divergence and molecular clocks, molecular tools in phylogeny, classification and identification, protein and nucleotide sequence analysis, origin of new species and proteins, gene duplication and divergence. Mechanism में population genetics में you'll be studying population, gene pool, gene frequency, Hardy-Weinberg principle, concept and rate of change in gene frequency through natural selection, migration and random genetic drift, adaptive radiation and modifications. Then we have sympatricity and allopatricity, different isolating speciation and isolating mechanisms, convergent evolution and divergent evolution, sexual selections and coevolution. This is all you need to study in molecular evolution. Brain behavior and evolution में approach, this is new for JRF students. It is not there in your there. Sir, English batch started or not? Crazy boy, I don't have any idea. Anju Shriran sir, 8 to 10 months लग जाने हैं इतने syllabus को cover करने में. बिल्कुल लग जाने हैं. At least इतने तो time आराम से लग जाने हैं, है ना? तो पहले मैं today is just a class where I am only letting you know what are the topics that you will study. From tomorrow onwards, I will get directly into the topic और इसमें क्या पढ़ना है वो आपको पता रहेगा. And once we complete a topic, we'll be discussing the questions associated with it as well. Biological clocks, development of behavior, social communication, social dominance, use of space and territoriality, mating systems, parental investments, reproductive success, parental care, aggressive behavior, habitat, selection and optimality in foraging, migration, orientation and navigation, domestication and behavioral changes. These are the topics that we'll be studying in behavioral psychology. Applied biology, and last is
this is what is the last portion that you are going to study for junior research fellowship. Once you get the fellowship in the later years, आगे और भी चीजें नई नई ऐड होती जाती हैं, and then you move ahead towards the pinnacle of success. Applied biology में microbial fermentation, production of small and macro molecules, application of immunological principles, that is vaccines, diagnostics, tissue and cell culture methods for plants and animals, transgenic animals, molecular approaches of diagnosis, strain identification, genomics and application to health and agriculture, including gene therapy, bioresource and their uses of biodiversity, breeding in plants and animals, including marker, assisted selection, bioremediation and phytoremediation, biosensors, and methods in biology mein, what are the methods that we are going to implant so that we can see a next level of science. In that we include molecular biology and recombinant DNA methods. Isolation and purification of DNA, that is your molecular basis of inheritance that you used to study in your class 12th NCERT book. Then gel electrophoresis method, isoelectric fluorescing methods, biotech का इस्तेमाल, molecular cloning of DNA and RNA fragments in bacterial and eukaryotic systems, expression of recombinant proteins using bacterial, animal and plant vectors, isolation of specific nucleic acid sequences, generation of genomic and cDNA libraries in plasmid, phage, cosmid, BAC and YAC vectors, in vitro mutagenesis and deletion techniques, some gene clock knockout in bacterial and eukaryotic organisms, protein sequencing methods, detection and post-translation methods of प्रोटीन्स. ये सारी चीजें आपको बायोलॉजी में स्टडी करनी है, बिकॉज व्हाई प्रोटीन से रिलेटेड इतनी काम होती है, बिकॉज 90 more than 46% ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मसल्स, है ना. एंड बाकी आप ओवरऑल अगर बॉडी स्ट्रक्चर में देखो तो अगर जो कार्य कर रहा है, दैट इज एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स, एंड दैट कंस्टिट्यूट द मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन इन योर ह्यूमन बॉडी. DNA sequencing methods, strategies for genome and gene sequencing method for analysis and gene expression at RNA and protein level, large-scale expression analysis such as microarray-based techniques, isolation, RF-LFI method, RAPD method, AF-LFI techniques, है ना, restriction, fragment, length, polymerase, ये सब इनके नाम हैं, ठीक है ना. Separation and analysis of carbohydrates, histochemical and immunotechniques, antibody generation, detection of molecules using ELISA method, RIA method. Then we have RIA is radio immunoassay, ELISA is enzyme-linked immunosorbent assay, microscopy, detection of molecules in living cells in situ and localization by techniques such as FISH and GISH. That is new to you. Biophysical methods, it includes analysis of molecules using UV visible fluorescence, circular dichroism, NMR and ESR spectroscopy, structural determination using X-ray diffraction techniques and NMR analysis using light scattering, different types of mass spectroscopy and surface plasma resonance methods. These are, you कह लो कि analytical biology है ये, जहां पे experiments and different techniques that is used in biology to understand the sequence and the stages of development that an organism has incurred at microscopic, genetic और organism level. ये हम इनसे स्टडी करते हैं. What are the statistical methods? Measures of central tendency and dispersal, probability distribution, binomial Poisson and normal Poisson's ratio का इस्तेमाल यहाँ करेंगे. Sample distribution difference between parametric and non-parametric statistics, confidence interval, errors, level of significance, regression and correlation, t-test, analysis of variance, X2 test, basic introduction to mutrovariate statistics, etc. And last but not the least is the radio labeling techniques, properties of different types of radioisotopes used in biology, their detection, measurement, their incorporation of radioisotopes at the cellular level, molecular level. This is what you need to study. And what are the techniques that we'll be using? Visualization of cells and subcellular components by light microscopy, resolving powers of different microscopy of different cells, scanning and transmission microscopes, different fixation and staining techniques for EM freeze-ec and freeze fracture methods for EM image processing in microscopy. This is in total the entire syllabus that you have to study for your NET लाइफ साइंसेस. तो आज मैंने सारी बातें, है ना, आगे भी देखोगे तो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल मेथड जैसे ईसीजी, ब्रेन एक्टिविटीज, पेट स्कैन, एमआरआई, एफएमआरआई, कैट स्कैन, ये सारी चीजें हैं. डिटेक्शन के मेथड्स at a genetic level, at a molecular level, all this the topics are what you are going to study. Thanks sir. आज फिर से सपना है मिल गया है. आपकी वजह से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड जर्नी रहेगी सर आपके साथ नेट की. अब ऐसा फील हो रही है कि ये करना था बट अब था नहीं करना है सर. थैंक यू. ऑल द बेस्ट टू एवरी वन ऑफ यू जो नेट लाइफ साइंसेस की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं. एंड फ्रॉम टुमारो वी विल बी
entering into a new world where we will be seeing a different aspect of biology at a different level, and that will be magnanimous for you as for the entire hierarchy or the people who belong to this biological civilization, right? That's it from today's class. We'll be seeing you again tomorrow at 4 p.m. on UGC NET अड्डा 24/7। तो एवरीडे यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पे मेरी जो रेगुलर क्लास रहेगी, अलार्म लगा लेना क्योंकि कोई भी क्लास मिस नहीं होना चाहिए। रेगुलर क्लास विल बी एट 4 to 5 p.m. Monday to Saturday. Very soon I will be bringing out a batch for the same, जिसमें हम एक स्पेशलाइज्ड एनवायरनमेंट पे हर एक चीजें और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। बट इन दैट आई विल रिक्वायर योर सपोर्ट एज वेल। डू शेयर द सेशन एंड आज तो बस सिलेबस का सेशन था, लेकिन कल से जो भी मैं सेशन लूं उसको आप बताइए, दिखाइए, लोगों को समझाइए, खुद भी समझिए, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ बायोलॉजी इन आवर लाइव्स। साइनिंग ऑफ, दिस इज अमित सिंह, फैकल्टी ऑफ साइंस फॉर योर यूजीसी CSR नेट लाइफ साइंसेज। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।